So, hello friends, we are live again. For Dr. Ratik to join. Okay. So today the topic is utility of mother tinctures in homeopathic practice. Clinically, how we can use mother tincture. Me, Dr. Jigar Patel, and my friend Dr. Ratik Mehta. We will share our experience, little bit of how we use mother tincture in our practice. Yes, Dr. Jigar. We are not able to see you. Hello. Dominic. You can see me? No. फिर से रिक्वेस्ट भेजना. Sorry for the interruption. You can see me, Dr. Jigar? Yes. Okay. Now, today's topic are mother tincture. Yes. So please share. So before we start, before we start the topic, I want to share something what I feel. So the Okay. homeopathy started since 1790. 1790, Hahnemann was translating the Culens Materia Medica, and 1796. After then, they started practicing homeopathy. It's been more than 200 years now. Still, the scenario is out of 100 students, those who pass the exam, hardly 10 students practice homeopathy. Isn't it the scenario? Hardly 10 students out of 100 practice homeopathy. So the point is, even after 200 years, it is very difficult. And if we see what modern medicine is, there was hardly anything in modern medicine 150 years back. And the way modern medicine has practiced or evolved, uh, earlier it used to take days for a patient when he enters a clinic. Even there was at the start of surgeries, in the era of surgeries, the simple surgeries used to take days. The patient used to stay in hospital for days for simple surgical procedures. Like even like in today's era, if someone has appendix, and
he will get discharged from 1 or 2 days. Earlier, it used to take many days. TKR, total knee replacement, for example, patient starts walking in 2 to 3 days. So the way modern medicine has become easier over a period of time, surgery has become easier. The comfort and convenience of patients, they are trying very hard for the patients to get easy, for the procedures to get easy. At the same time, the wonderful science of homeopathy, day by day we are making it very complicated so that student cannot practice. इतना कॉम्प्लिकेट हो रहा है डे बाय डे होम्योपैथी, सो दैट we hardly get 5 or 10 students out of 100 who dare to practice homeopathy. And when we come in contact with students, when we talk to them, homeopathy seems like a super science, like a rocket science. But actually, it is very wonderful and easy science, because most of our stalwarts were not a they did not belong to medical profession. Like Bonning Hossain, he was not a medical student at all. Plenty of such uh, plenty of such old stalwarts were very layman person. They had nothing to do with, and they contributed a lot. So homeopathy is such a simple and beautiful science, but day by day we are making it complicated. That is the thing I wanted to share. Let's try to make it very simple so that it can be practiced easily. Now you can start, Radip, तो with तुम यही बोलना mother चाहते हो teacher. कि दिन प्रतिदिन होम्योपैथी को कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है? किया जा रहा है, यस. डे बाय डे वी आर मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं लोग. हाँ, बना हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. अब कंपेयर टू मॉडर्न मेडिसिन, वो लोग पहले सर्जरी के बाद, पहले के जमाने में या फिर बिफोर 70 to 10 years या 15 ईयर अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, तो उसमें वो लोग 6-7 दिन या 10 दिन तक का बेड रेस्ट रहते थे. लेकिन वो अब सिंपल बनाते हैं कि जब टीकेआर पेशेंट करवाता है तो वो 2-3 दिन में हॉस्पिटलाइज से घर चला जाए या फिर वॉकर से चल सकता है. तो वो सिंपल बनाते हैं और हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. Yes, there was a time when X-ray was taking X-ray was such a big thing. The investigation, radiograph, X-ray was a big thing. मतलब याद है, जैसे गांव से अगर कोई एक्सरे कराने आता था तो कुछ लोगों को साथ में लेकर आता था, 5-10 बंदों को. That was the time few years back. Even I remember in my childhood. सब साथ में बहुत सारे लोगों को लेके आते थे. क्या कराने? सिर्फ एक्सरे कराने. एंड नाउअडेज एमआरआई कराने अकेला बंदा जाके करा के आता है. दैट इज द कन्वीनियंस. उसको क्या बोल सकते हैं, कंफर्ट या ईज. सिंपल बनाया इतना उन्होंने कि अकेला आदमी जाके करा सकता है. सर्जरीज बहुत सारी ऐसी है जैसा अकेला एक पेशेंट अपने आप करा के आता है. दैट इज इतना इजी कर दिया है. पर होम्योपैथी हमने बहुत कॉम्प्लिकेट किया, बहुत. So let's try, let's learn something that can make us simple. Radip. Okay, back to today's topic, mother tincture. तो मदर टिंचर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे होम्योपैथ है जो ऐसे बोलते हैं कि मदर टिंचर इज नॉट ए होम्योपैथिक प्रैक्टिस या इंक्लूडिंग इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस. तो वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं. लेकिन मैं आज मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मदर टिंचर के बारे में तो थोड़ा बताना चाहता हूँ. तो मदर टिंचर मेनली हम लोग ऐसे केसेस में इंडिकेट करते हैं जहाँ पे हम लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए या एक्यूट में. तो 70 to 80% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग एक्यूटली मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं. दूसरा, क्रॉनिक में भी यूज कर सकते हैं, लोकली एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं. जैसे अभी मार्केट में कई सारी क्रीम्स आती है, जैसे कि सल्फर ऑइंटमेंट या एजाडिक्टा इंडिका ऑइंटमेंट या कैंथारिस ऑइंटमेंट.
तो वो बेस उसका क्या है, तो वो मदर टिंचर का ही बेस है, वो लोकली एप्लीकेशंस पे देता है। या थूजा, तो हम लोग को कई सारे प्रैक्टिसर ऐसे होते हैं जो थूजा इन केसेस ऑफ पर्टिकुलरली वार्स, तो लोकली एप्लीकेशंस में देते हैं, एज वेल एज कोलोफाइलम ऑल्सो देयर, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो पहले मैं मदर टिंचर के बारे में थोड़ा बताऊं, तो मैं बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो मदर टिंचर्स के, अकेले मदर टिंचर्स के ही मैं सॉल्व करता हूँ। और इन इंडिया तो कई सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सेंटीसिमल या डेसिमल या एलएम पोटेंसी यूज ही नहीं करते, पूरी प्रैक्टिस ओनली एंड ओनली यूज ऑफ मदर टिंचर। तो मैं सिंपल मदर टिंचर के बारे में बताऊं तो उसके डोजेस पहले, तो मैं अपने प्रैक्टिस में इन एडल्ट 10 to 15 ड्रॉप्स, इन चाइल्ड 5 to 8 ड्रॉप्स, infant 1 drops in mother milk, and newborn तो 1/4 drop of mother milk। मैं रिपीट करता हूँ, एडल्ट 10 to 15 ड्रॉप्स, चाइल्ड 5 ड्रॉप्स, infant 1 drop in mother milk and newborn। तो ऐसा नहीं होता कि मदर टिंचर हम एडल्ट में यूज कर सकते हैं या ओल्ड एज में यूज कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट में किसी भी तरह की पैथोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका इंडिकेशन हमको पता होना चाहिए। अब डॉक्टर जिगर थोड़ा। Yes, if let me start with the remedy that we all know, that is one of wonderful healing agent, calendula. So what Borix write is remarkable healing agent applied locally. इसका पहला लाइन ही ऐसा है, applied locally, and it promotes healthy granulations and rapid healing by first intention. So बहुत बेस्ट ड्रग है, ऑलमोस्ट एवरीवन joined right now know what calendula is, and most of them might have used calendula. So I thought to start with this. It produces healing by first intention, मतलब primary intention, where there are less chances for scar tissue to develop, where there are less chances for minimal granulation tissue develops, and there are less possibility of scar to develop. That is the power of calendula. Another very interesting thing is you can directly apply calendula on injuries where the bleeding is going on, where are cut injuries, any kind of injury. You can use calendula with 50% of water so that it will not burn, मतलब जलन कम हो, इसीलिए पेशेंट को डायरेक्टली अप्लाई किया तो पेशेंट को जलन होता है, so it will be painful. Otherwise you can even apply directly the mother tincture on wound. So that is for wound. Another is hemostasis after tooth extraction. So calendula you can use like this. जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन कराया हुआ है किसी पेशेंट ने, वेरी कॉमन थिंग, सभी ने हमारे आसपास कोई ना कोई तो रहेगा ही जिसने दांत निकलवाया है, टूथ एक्सट्रैक्ट करा है. So why can't we use this calendula mother tincture rather than कोई एंटीबायोटिक ले या वो पेन किलर दे रहे हैं डॉक्टर वो ले. अगर हम होम्योपैथिक कर रहे हैं, हमको पता है कैलेंडुला इज अ वंडरफुल रेमेडी. एंड ब्लीडिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन 24 आवर, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग बहुत सारे पेशेंट को रहता है आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन. व्हाई नॉट वी टेल द पेशेंट, और इफ इट इज रिलेटिव अराउंड अस, why can't we tell them to gargle water mixed in calendula mother tincture? Why? That is a best hemostatic. It will stop the bleeding from teeth immediately after extraction. So remember this. Next one is, let me tell you my experience. In my home, at my home, there is no betadine, no soframycin, no hydrogen peroxide, nothing. Only calendula. Because it is such a wonderful remedy that it acts like there is no comparison. Even you don't need to use betadine or soframycin, anything like that.
it helps to heal faster. Even it will not it will help to prevent infection also. So try and use calendula from now and onward. Leave all other dressing material aside. First thing you need is calendula mother tincture. As an Radip, antiseptic. yeah, as an antiseptic, as a rapid healing agent, it has lot of benefit, lots of benefit, and even it reduces scar. Even suppose someone has gone through an accident and he has to go through the stitches लिए हुए हैं, तो उनमें भी हम कैलेंडुला ट्राई कर सकते हैं टू मिनिमाइज द स्कार टिश्यू कम होगा उससे. सो जितना हम ज्यादा यूज करें उतना अच्छा है. ओके. यस राजदीप. यस. ओके, तो मैं नक्स वोमिका, तो सबको पता ही है इज वेरी पॉइजनस, लेकिन मैं मेरे कई सारे पेशेंट में नक्स वोमिका एज ए ट्यूब मदर टिंचर फॉर्म में यूज करता हूँ. तो बेसिकली सबको पता ही है कि नक्स वोमिका हम लोग गैस्ट्रिक कंप्लेन में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन एज वेल एज इन आई पर्सनल एक्सपीरियंस वन ऑफ माई पेशेंट्स, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक आया था और उसको पैरालिसिस हो गया था. तो मैंने उसको नक्स वोमिका क्यू लोकली एप्लीकेशन में दिया था, तो उसको 70 to 80% अभी बेटर है. इट्स नाउ कंटिन्यू ट्रीटमेंट. तो फर्स्ट वन इज नक्स वोमिका इज ए nerve tonic, excellent and sure result in initial onset of paralysis caused by ischemic changes in brain and intracranial hemorrhage. लेकिन आप कब यूज कर सकते हैं? इनिशियल लेवल पे ही कर सकते हैं. अगर पेशेंट को स्ट्रोक आया है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है और उसको पैरालिसिस जैसा लग रहा है, तो आप 12 से 24 घंटे 12 to 24 आवर्स में आप यूज कर सकते हैं. एज लोकली भी एज यूज कर सकते हैं और इंटरनली भी यूज कर सकते हैं. इंटरनली यानी कि बहुत कम, मतलब मैं यूज करता हूँ 5 to 7 ड्रॉप्स फॉर हाफ कप ऑफ वाटर इन बीडी 2 times a day. If patient unconscious and unstable, कुछ वो मेडिसिन स्वयं नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग जेंटली रब भी कर सकते हैं फिंगर वेल में, पाम में या सोल में, एवरी 6 आवरली, 6 to 10 आवरली या 4 आवरली भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ कंडीशन ऑफ पेशेंट. देन डी एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको. तो मैं मदर टिंचर्स इन नक्स वोमिका स्पेसिफिकली इस्चेमिक स्ट्रोक या इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है जिस पेशेंट में, जिसमें पैरालिसिस होता है, इसमें लोकली या इंटरनली दोनों में मैं यूज करता हूँ. और मैं ज्यादातर डी एडिक्शन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको. तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑफ दैट मैंने पढ़ा था, मैंने पेशेंट्स में अप्लाई भी किया, मेरे को रिजल्ट मिला. दैट्स व्हाई आई आस्किंग इज मोर बेनिफिशियल. के कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक वो लोग ब्लड थिनर देते हैं आफ्टर इस्केमिक स्ट्रोक, लेकिन कोमॉर्बिडिटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको पैरालिसिस होते फिर रिवर्सिबल चेंजेस नहीं होते. तो एक बार देख के ट्राई कर सकते हैं. अगर इनिशियल स्टेज पे हमको दिमाग में आया तो अच्छी तरह से पेशेंट की लाइफ अच्छी हो जाएगी. योर टर्न. The next mother tincture I want to share is Avena sativa. It's Avena sativa. What is written in Boric is it improves nutrition of brain and nervous system. So it is a nutritive for brain and nervous system. And what changes it brings is it is used in nervous exhaustion. So nervous exhaustion, like lack of concentration, so inability to fix a mind on any one subject, especially when there is a history of masturbation or sexual indulgence. So nervous exhaustion manifested as lack of concentration. We have a lot of students, though they are very they cannot concentrate when they read, and in the background there is a nervous exhaustion, or there is a history of too much indulgence in sexual activity like masturbation. In such cases you can use Avena sativa as nervous tonic.
for a nutrition to brain and nervous system. Another thing is after acute disease, there are such patients who have gone through any kind of infection, acute disease, and after that, they have problem in concentration. They cannot fix their attention. In those cases, you can use this mother tincture also. We have plenty of such patients, and when they usually they go to a general practitioner allopathy and they prescribe, they have nothing in such kind of cases. They prescribe multivitamin, nothing else, or they will try and find out B12 कम है, ऐसा कुछ करेंगे और उसका report देंगे. They have no scope. But this is a wonderful remedy. Another indication is debility. So especially weakness or debility after physical illness. कुछ हुआ है पेशेंट को, एक्यूट बीमारी हुआ है, एक्यूट डिजीज हुआ है, और उसके बाद वीकनेस है. प्लेंटी ऑफ केसेस है, बहुत सारे पेशेंट में ये रहता ही है कि एक्यूट डिजीज हुआ है, जैसे कि डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, और उसके बाद वीकनेस है. इवन यू कैन यूज दिस मदर टिंचर इन एक्यूट फेज. मतलब अभी डेंगू हुआ है, पेशेंट को वीकनेस है, 2 3 4 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, तो भी यूज कर सकते हैं. एंड इवन आफ्टर ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि नाउ ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, कुछ भी हुआ है ऐसा एक्यूट इन्फेक्शन, और उसके बाद वीकनेस हो रहा है या फिर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहा है पेशेंट, ऐसे केस में ट्राई एंड सी द मैजिकल, remember, see the magical effect of this avena sativa within 2 3 or 4 days. Mark my words, 2 3 or 4 days appetite will return, even appetite will return, and concentration, energy level will return. I have prescribed this in plenty of patients, and one thing very common what I have found is almost all patient has noted that after taking this medicine for 3 or 4 days, they got sound sleep. मतलब सुबह जब उठते हैं तो एनर्जेटिकली उठते हैं, एनर्जी रहता है शरीर में, एनर्जेटिकली उठते हैं, पूरे दिन मूड अच्छा रहता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी गुड रेमेडी फॉर दिस डेबिलिटी. मतलब मूड ऑफ है, सैडनेस है, एपैथी है, नींद अच्छे से मतलब आ नहीं रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है. सो रिमेंबर दिस. अनदर उसका इंडिकेशन है फॉर मॉर्फिन हैबिट. सो दोज who live in such area where eating opium or morphine is very common, in those people you can use this to leave the habit or to counteract the effects of those addictive substance, morphine and opium. Another, I told you, insomnia. It is also a good remedy for insomnia, especially when the reason is nervous exhaustion or the debility after acute illness. Another indication is acute coryza. You can give this mother tincture as SOS for a patient who get recurrent rhinitis, recurrent coryza. उनको देके रख सकते हो और बोलना है जब भी हो in a acute, very acute phase, you can give this remedy in 20 drops. This is written in Fatak Mati Remedica. Fatak में पूरा drops. Actually, it is very rare to find in Fatak Mati Remedica where Fatak writes to use mother tincture. It is very rare. So you can understand the value of this symptom. In acute coryza, use 20 drops and in hot water. The point is what is written, use it in a hot water. And the experience is this medicine acts based in hot water. Another indication is nervous palpitation of heart. स्पेशली इन अल्कोहलिक ड्रिंकर, पाल्पिटेशन हो रहा है, नर्वस एक्सॉशन के साथ हो रहा है, एनीथिंग कुछ ऐसा क्रॉनिक स्ट्रेस है, ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद पाल्पिटेशन हो रहा है, एंड और देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म. इन सच केस यू कैन यूज दिस. द नेक्स्ट मदर टिंचर व्हाट आई वांट टू शेयर इज अ पैसिफ्लोरा इंकार्नेटा. This is what is written is it has a quieting effect on nervous system. So nervous system को quiet करता है, शांत करता है. So it is efficient as antispasmodic remedy. So it is, I have not used, but it is written in Fatak that during convulsion in teething children you can use this passiflora. This is written in Fatak. So
पैसिफ्लोरा इज वन ऑफ मेन रेमेडी फॉर इंसोम्निया. सो नींद नहीं आ रहा है इंसोम्निया के लिए. लास्ट टाइम भी शायद हमने बात किया था. इंसोम्निया इज सच अ कॉमन कंप्लेंट नाउअडेज, एंड स्पेशली इंसोम्निया इन इन्फेंट्स एंड एजेड. ओल्ड एज में हो रहा है इंसोम्निया या फिर इन्फेंट्स या चिल्ड्रन में हो रहा है, देन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. और कौन से लोगों में मेंटली वरीड, जो क्रॉनिक स्ट्रेस या क्रॉनिक वरी है, चिंता कर रहे हैं क्रॉनिकली, ऐसे पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रहा है तो पैसिफ्लोरा सोच सकते हैं. और ओवरवर्क्ड पर्सन, अगर ज्यादा काम कर लिया है, मतलब टायर्ड है, फिजिकली टायर्ड है पर नींद नहीं आ रहा है, physically tired but cannot sleep, these are the area where you can use passiflora to induce sleep for insomnia. Another thing what is written in Fatak is, in case of asthma, when it is acute attack, 10 to 30 drops mixed in hot water, it will act as a palliative for acute attack. This is written in Fatak Materia Medica. As I told you, it is very rare to find Fatak recommending mother teacher, and especially the dose is written 10 to 30 drops for acute attack of asthma. Try this because it is antispasmodic remedy. So it will soothe the spasm and the patient will sleep well. Another thing is, when there are some cases of insomnia where they are unable to sleep due to pain, matlab there is some inflammatory condition in body, and because of that the pain and patient is unable to sleep. In such cases you can use passiflora to induce the sleep. These are few of the indications. Pradeep, anything you want to add or new remedy? मेरा एक पेशेंट था जिसको इंसोमिनिया की ही तकलीफ थी, तो मैंने उसको पैसिफ्लोरा दिया था सर. लेकिन आफ्टर 10 to 15 डे वो पैसिफ्लोरा ले रहा था कंटिन्यूस. उसको 15 डे लिया, बाद में उसको बॉडी एक स्टार्ट हुआ पैसिफ्लोरा लेने के बाद. तो मैंने उसमें एल्डोसटाइवा ऐड कर दिया, तो सारी कंप्लेन चली गई और उसको नींद भी अच्छी तरह से आने लगी. तो कई सारे ऐसे पेशेंट थे जिसमें क्रॉनिकली हम लोग पैसिफ्लोरा 1 मंथ या 15 डे 13 डे तक चलाते हैं. तो कई पेशेंट्स में ऐसा होता है कि इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं आता, लेकिन साथ में पेशेंट बॉडी की कंप्लेन लेके आता है. तो यू शुड ऐड ऑन एवेनासटाइवा मिक्स विद पैसिफ्लोरा. मैं कई पेशेंट्स में 2 मदर टिंचर साथ में देता हूँ, कहीं में मिक्स करके भी देता हूँ. मैं नया मदर टिंचर एजाडिक्टा इंडिका, जो हम लोग हमारा नीम, तो इस वेल नोन ऑफ ब्लड प्योरीफायर इन माय प्रैक्टिस क्लिनिकली all type of skin disease, is very beneficially in all type of skin disease, chronic relapsing fever, recurrent cough and cold, और medically renal disease. तो किसी को भी आइडिया नहीं होता कि एजाडिक्टा इंडिका जो हमारा नीम है वो किडनी पे भी इफेक्ट करता है. तो कई ऐसे पेशेंट है जो डायलिसिस पे होते हैं, जिसमें हम लोग एजाडिक्टा इंडिका क्यू मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं. ऑल्सो हेल्प्स लोअरिंग सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, जिसमें हम लोग इल सीरम दे सकते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट टाइप ऑफ स्किन डिजीज, रिनल डिजीज, कई सारे रिंगवर्म पेशेंट्स होते हैं जिसमें मैं एजाडिक्टा एज ए लोकली भी अपने पेशेंट में देता हूँ. तो किसी भी नाउ डे रिंगवर्म इज वेरी टफ, या हमारा हेडेक है कि हम लोग रिंगवर्म में इतना क्लियरली हम पेशेंट बता नहीं सकते कि तुमको मैं क्लियर कर ही दूंगा या तेरे को अच्छा हो ही जाएगा. तो इसमें हम टेम्पररी बेनिफिशियल पेशेंट भाग ना जाए हमारे से, तो हम लोग temporary you should use Azadirachta indica as a cue in local application. Then second one is Bacopa Manori, Brahmi. So it's brain tonic as well as use after paralysis attack of intracranial hemorrhage. जो ICH होता है
कि पैरालिसिस अटैक होता है, जैसे हम लोग नक्सवामी का यूज करते हैं, जो इनिशियल स्टेज पे करते हैं, लेकिन उसके बाद पैरालिसिस की वजह से जो वीकनेस आती है, उसमें हम लोग थिंक ऑफ डेकोपामिनोरी या ब्राह्मी, memory loss as well as insomnia. Whooping cough in children is good. Whooping cough or in children use also हम लोग उसको एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं. एक्सटर्नल एप्लीकेशन इन मल्टीपल जॉइंट ऑफ रूमेटिज्म, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स. तो हम लोग ब्राह्मी तो हम लोग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम लोग ब्रेन टॉनिक से ऐसे तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग रूमेटिज्म या मल्टीपल जॉइंट जिस रूमेटिज्म में अफेक्ट होते हैं, इसमें हम लोग लोकली भी एप्लीकेशन कर सकते हैं. देन चाइना, जिससे हमारी होम्योपैथी की शुरुआत हुई, चाइना. तो एंश्योर रैपिड रिकवरी आफ्टर बॉडी फ्लूइड लॉस. कई ऐसी पैथोलॉजी होती है जिसमें बॉडी फ्लूइड लॉस होता है, जिसके बाद वीकनेस आती है, जिसमें हम लोग रिकवरी ज्यादा लेना चाहते हैं या फास्ट रिकवरी लेना चाहते हैं, जिससे हम लोग एज ए चाइना क्यू इन ऑल टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेन, यूजफुल ऑफ फटीग एंड वीकनेस आफ्टर सर्जरी. कोई भी मेजर सर्जरी हो जिसके बाद पेशेंट को बहुत सारी वीकनेस आती है, डायरिया होता है, तो इसमें भी हम लोग चाइना इन मदर टिंचर फॉर्म्स यूज कर सकते हैं. ऑल टाइप ऑफ क्रॉनिक रिलैक्सिंग फीवर. कई पेशेंट को ऐसा होता है कि फीवर कंटिन्यू रहता है, जिसमें पेशेंट एलोपैथिक दवाई पैरासिटामोल खाता ही रहता है, मतलब दिन में 2 बार खाए 3 बार खाए, लेकिन उसका फीवर जाता नहीं है. जब तक पैरासिटामोल है तब तक पेशेंट को अच्छा लगता है, लेकिन फिर से जब पैरासिटामोल की इफेक्ट कम हो जाती है, पेशेंट को फिर से फीवर आ जाता है. अकॉर्डिंग टू फिजिशियन वो सब रिपोर्ट्स करवा लेता है, अकॉर्डिंग टू सीबीसी तो कोई इन्फेक्शन नहीं आता, लेकिन पेशेंट का टेम्परेचर हाई रहता है. जिसमें मैं एज ए क्यू इन चाइना क्यू 7 to 8 डे या मोर ऑन 10 डे, तो उसको अच्छा बेनिफिशियल रहता है. और कई सारे पेशेंट्स में मैं चाइना इन हेयर रिस्टोरेशन, हेयर फॉलिंग पेशेंट में चाइना क्यू लोकली मदर टिंचर डायरेक्टली ऑन अप्लाई टू स्काल्प, वो मैं यूज करता हूँ और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है. जैसे हम लोग विस्पाडन है या अग्निका है, जेबोरंडी है, वो तो हम लोग कई सारे देते हैं. लेट थिंक ऑफ चाइना. कोई ऐसा मतलब हम लोग बोलते हैं कि मलेरियल फीवर है या टाइफाइड फीवर है, बाद हम लोग एसिड फ्लोर, सिंगल रेमेडी एसिड फ्लोर, लेकिन कई ऐसे फीवर है जिसके बाद भी मतलब पेशेंट को हेयर फॉल हुआ है, तो थिंक ऑफ चाइना एज वेल एज अप्लाइंग लोकली और डायरेक्टली ऑन स्काल्प. आपका कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर जिगर एजाडिक्टा इंडिका? Yes, Azadirachta is how I use is, it is a blood purifier. So in many cases of skin, it is a very good remedy used externally as well as internally. Another thing is what I read from Dr. Sarkar is Azadirachta is a Indian lycopodium. मतलब lycopodium जैसा ही patient रहेगा. With 4 to 8 p.m. aggravation, hot patient, abdominal complaint like lycopodium. So it is very Indian equivalent to lycopodium. But mostly I have used it in mother tinctures with skin ailments and as a blood purifier. China I haven't used till now. So next drug from my side is alfalfa. So alfalfa, we all know that is a wonderful remedy, and what is written is it favorably influences nutrition. So earlier the remedy Avena sativa was nutrition to brain and nervous system. This is a nutrition. How it done is evidence based, where we can find its nutritive qualities, toning up appetite. So it is related to GIT, gastrointestinal
system, toning up the appetite and digestion, resulting in greatly improved mental and physical vigor, and with gain in weight. So beautifully, Fatak has written lot of things in one sentence. So it tones up the appetite. Mind, lots of patients, plenty of patients have this disturbed appetite. Day in and out in clinic, we get this kind of patient, disturbed appetite. भूख नहीं लगता है, बहुत कॉमन कंडीशन, बच्चों, इवन इन चिल्ड्रन ऑल्सो. The appetite is lost. It can be any reason. It can be acute disease, acute infection, or chronic stress, or uh, any reason. It doesn't. But if there is loss of appetite, this medicine tones up the appetite and digestion also. It helps in digestion. And what is the effect? सो मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, विगोर, एनर्जी इंप्रूव होता है उससे. पेशेंट फील्स मोर एनर्जेटिक, मोर मेंटली फ्री एंड फ्रेश आफ्टर यूजिंग अल्फा अल्फा. एंड गेन इन वेट. बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो उनको वेट गेन करना है, लाइफस्टाइल इज उनका बहुत अच्छा है पर वेट गेन नहीं हो रहा है. और बच्चों को लेके आते हैं बहुत सारे जो खाते नहीं है, मतलब एपेटाइट नहीं है, लॉस्ट है, एनी रीजन हो सकता, कुछ भी रीजन हो सकता है, पर खा नहीं रहे और मतलब बहुत लीन थीन होते हैं बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग गुड फूड. उनको अल्फा अल्फा दे सकते हैं टू राउज द एपेटाइट. मतलब अल्फा अल्फा देने के बाद उनको भूख लगता है एंड इट हेल्प्स टू गेन द वेट. मसल फैट बिल्डर का काम करता है. इट इज रिटर्न एक्ट्स एज फैट प्रोड्यूसर, ऐसा भी लिखा है फाटक में, एक्ट्स एज फैट प्रोड्यूसर. Disorders characterized by malnutrition. This is the line written in. So there are lots of diseases. They have malnutrition as their base. It can be anything, or even not. It is not written, but I have used the alpha alpha as for the any kind of deficiency. जैसे कि पेशेंट B12 ले रहे हैं, बहुत सारी टेबलेट्स ले रहे हैं मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा के लिए. So I would rather prefer this alpha alpha over lot of such external supplements, and it really helps so much in malnutrition as well as this micronutrient का भी अगर absorption नहीं हो रहा है तो भी बहुत अच्छा काम करता है. And in cases of even PEM, protein energy malnutrition, this is a wonderful remedy you can use. Another इंडिकेशन इज डेफिशिएंट लैक्टेशन. बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा. डेफिशिएंट लैक्टेशन मतलब उतना मिल्क नहीं आ रहा है जितना चाहिए. सो दिस इज नंबर 1 रेमेडी आई यूज. और लिखा है फाटक में क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब इट इंक्रीजेज द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा रहा है, इट क्वालिटी भी अच्छा कर रहा है उसका. सो अल्फा अल्फा इज गुड रेमेडी for this kind of. You can try. एक जितने भी हम मदर टिंचर बोल रहे हैं आपको ट्राई करना है, एक बार देना है पेशेंट को एंड देन आपको हमें शेयर करना है हाउ ब्यूटीफुली दे एक्ट. और अगर नहीं एक्ट कर रहा है तो भी हमको शेयर करिए कि आपने बोला है पर काम नहीं कर रहा है. अनदर बहुत एक अच्छा और बोलता हूँ मदर टिंचर, सिर्फ एक ही लाइन, प्लांटागो मेजर. सबने सुना होगा प्लांटागो मेजर. इट इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर टूथेक. उसको क्या करना है आपको, वो जो कॉटन स्वैब आता है, कॉटन स्वैब में उसको सोक करना है, डुबो कर, जहां पर दर्द हो रहा है, जहां पर जो भी दांत मतलब टूथ पेन कर रहा है वहां पे उसको रखना है एंड इट विल एक्ट मैजिकली विद इन मोमेंट्स. इट विल एक्ट विद इन मोमेंट्स. आई हैव वेरीफाइड दिस इन plenty number of cases. Even routinely it is used. होम्योपैथी नहीं ले रहा है बट अब बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट या रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स तो ऑलमोस्ट सभी रहेंगे जिनके घर में ये दवाई होगा. क्योंकि अगर किसी को दर्द, इवन जिंजीवाइटिस में भी काम करता है. जिंजीवाइटिस है, गम स्वोलन है, इवन इट इज रिटर्न स्वोलन चिक्स. इतना अगर बढ़ गया है फिर भी आप प्लांटा को यूज कर सकते हैं. सिर्फ लगाइए, उसको लगाना है, 5 मिनट रखना है. within 5 or 10 minutes you will get the result. और ऐसा लगे तो फिर से उसको बोलिए, पेशेंट को आप बोल सकते हैं दिन में 4 या 5 बार वो
कॉटन स्वेब सोक करके लगाना है. नाउ रादीप. My dad is Boldo. So Boldo is good in hepatobiliary systems, polylithiasis, hepatic complaint due to acute polylithiasis, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है वहाँ पे डायलिटेशन होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है या हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है, और स्लज इन गोल ब्लेडर, ग्लोमेरुलर स्लजिस हो जाता है, जिसमें ओनली बोल्डो क्यू इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ लीवर कंप्लेंट, जहाँ पे हम लोग कार्डस मर या चेलिडोनियम यूज करते हैं, लेकिन व्हेन यू कार्डस मर या चेलिडोनियम काम नहीं करता तो थिंक ऑफ बोल्डो, 10 to 15 ड्रॉप्स, हाफ कप ऑफ वाटर 2 times a day. सिंपल था. फिर मैं बोलता हूँ डिजिटालिस. दिस ऑल आर known for digitalis is good for heart, लेकिन digitalis never give to hypertensive patient. जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, इस पेशेंट को कभी भी डिजिटालिस इन मदर टिंचर फॉर्म नहीं देना है. तो स्पेसिफिकली डिजिटालिस हम किस पेशेंट में यूज कर सकते हैं, तो यूज फॉर लोअर ब्लड प्रेशर, लो पल्स रेट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, जिसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, यूज मदर टिंचर. जहाँ पे कोई पेशेंट है, मैं ज्यादातर आईसीयू में 2-3 बार मैंने यूज किया है, जिसमें पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर था, लो पल्स रेट थे, कंजेस्टिव कार्डियक पेशेंट था, जहाँ पे उसका जो प्रेशर था, ब्लड प्रेशर वो 70 to 70 और सिस्टोलिक 70 था और डायस्टोलिक 40. तो जिसमें इंजेक्शन एड्रेनालिन हम लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक साइंस. तो जिसमें मैंने 5 ड्रॉप 5 ml of waters in every 1 hourly. Then after 4 to 6 hours, patients can increase the BP 1 time to 70. तो जहाँ पे हम लोग एड्रेनालिन यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बीपी लोअर ब्लड प्रेशर जिस पेशेंट को रहता है, वहां पे हम लोग डिजिटालिस अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं इन कंपैरेटिवली इन कार्डियक पेशेंट. लेकिन ये वन थिंग, जिस पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है, जिसमें हम लोगों को कभी डिजिटालिस क्यू फॉर्म में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंसिव मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है तो पेशेंट का बीपी ज्यादा फॉल हो जाएगा. देन सेकंड वन इज एपीजीआर रिपेंस, EPIGEA, एपीजीआर रिपेंस, जिसको मैं ज्यादातर किडनी वाले केसेस में ज्यादा यूज करता हूँ, जिसमें सॉलिडागो के साथ में यूज करता हूँ. तो सॉलिडागो फाटक इन फाटक रेफरटरी कंप्लीट सिजेशन ऑफ किडनी, सॉलिडागो आर देयर, लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी, सॉलिडागो आर देयर. तो जिसमें हम लोग सॉलिडागो के साथ एपीजीआ यूज कर सकते हैं, जिसमें मेडिकल रीनल डिजीज होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आर देयर, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या पाइलाइटिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन आइदर ड्यू टू यूरिथ्रल स्ट्रक्चर और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट. तो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में हम लोग सबाल सेलुलर थिंक कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है 70 to 80% में सबाल सेलुलर काम करता है, लेकिन कई पेशेंट अकॉर्डिंग टू प्रोस्टेट एनलार्जमेंट सबाल सेलुलर काम नहीं भी कर सकता. तो थिंक ऑफ एपीजीआर रिपेंस. Then geranium mac. Geranium mac is anti-hemorrhagic medicine. Act well when most well-indicated medicine fail. जैसे हम लोगों ने एंटी-हेमरेजिक में फॉस्फोरस है, हेमामालिस है, सब कुछ दे दिया, लेकिन पेशेंट का ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता. तो जिसमें हम लोग थिंक ऑफ geranium mac, stop like menorrhagia, PPH, bleedings of piles, एपिस्टैक्सिस या हिमोप्सिस. तो किसी भी ओरिफिस में बॉडी में आप ब्लीडिंग देखते हैं, जहाँ पे हमने मेलिफोलियम यूज कर लिया या हेमामालिस यूज कर लिया, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो थिंक ऑफ geranium mac.
स्टॉप मेनोरेजिया या पीपीएच, आफ्टर डिलीवरी पीपीएच जैसी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो थिंक ऑफ गैरेनियम मैक. ऑल्सो ब्लीडिंग पाइल्स, एपिस्टेक्सिस, या किसी भी पेशेंट में हेमेटोमेसिस होता है जिसमें ब्लीडिंग या स्पूटम में ब्लड आता है, तो इसमें फ्यू आवर्स में आप जब गैरेनियम मैक देंगे तो विथ इन 4 to 5 hours पेशेंट फील्स बेनिफिशियल अ लॉट इन हेमोस्टेसिस. या मैं कई पेशेंट्स में जिसमें नेजल पॉलिप्स होता है, जिसमें मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी देता हूँ. या हम लोग किसी भी अल्सर होता है जिसमें से ब्लीडिंग बंद नहीं होता, तो जिसमें गैरेनियम मैक हम लोग एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं. डॉक्टर जी का Yes. So हम from लोग my का एक्सटर्नली कोई अल्सर होता है या कोई वुंड होता है जिसमें हम लोग एक्सटर्नली एप्लीकेशन में बायोकेमिक आई थिंक फेरम फोर्थ. yes, वो बायोकेमिक में देखेंगे हम. ओके, तो Yes. So बायोकेमिक भी हम from लोग एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं. yes, yes. So from my side, the next remedy is Grindelia robusta. Grindelia robusta mother tincture. It is very best remedy where wheezing and operation uh, is found in bronchitis. So acute or chronic doesn't matter. Acute or chronic both. Bronchitis where wheezing and operation of chest is prominent, and the symptom is patient cannot lie down. The moment he lies down, he has to bend up and bend forward for amelioration. He cannot lie down. And with this, the expectoration is very tough, tenacious, and whitish in color. It is white in color, very tough. पेशेंट को हम बोल ऐसे पूछ सकते हैं कि मतलब जो भी बलगम आ रहा है वो कैसा है, कितना पानी उसको उसके ऊपर डालना पड़ता है तब वो साफ होता है. देन पेशेंट विल टेल यू बाल्टी भर के पानी डालो तब वो साफ होता है. दिस काइंड ऑफ टीनेशियस expectoration you can find in Grindelia robusta, and it is whitish in color. And in such patient, little expectoration ameliorate. अगर वो थोड़ा सा भी बलगम अगर बहुत खांसने के बाद बाहर आ रहा है, then it will relieve the patient temporarily. And उसके साथ wheezing रहेगा, आवाज आएगा सीसोटी जैसा. So remember this combination. Remember this combination. Yes, yes, that is what. Remember this combination of symptoms. Asthma, emphysema, matlab COPD or chronic bronchitis. So asthma, emphysema, and dilated heart. If these three pathology are together, definitely you can think of Grindelia, and it is a wonderful remedy. Even in simple cases, single cases of emphysema, you can use this remedy, Grindelia. It is a good remedy because emphysema is a very irreversible condition, and there are allopathy में बहुत कुछ scope नहीं है. So this medicine is one of very good remedy for emphysema. Two more remedies from my side. The next is Cochlearia armoracea. Cochlearia. It is a wonderful remedy for dandruff. जिनको भी dandruff हो रहा है, locally उसके यूज करना है. कोकोनट ऑयल लेना है, कोपरेल पैराशूट का कोकोनट ऑयल, उसमें मिक्स करना है ये कॉक्लेरिया मदर टिंचर, एंड देन वो ऑयल अप्लाई करना है. इट्स अ बेस्ट रेमेडी. उसका स्मेल बहुत ही खराब है. कॉक्लेरिया इज वन ऑफ रेमेडी. अनदर इज ब्लाटा ओरिएंटालिस. दे हैव वेरी बैड स्मेल, वेरी वेरी बैड स्मेल. दो यू कैन पेशेंट को पहले से ही कहना है कि उसका स्मेल थोड़ा ऐसा आएगा, बट यूज करिए आप. And it has a very beautiful result in dandruff. Then the next remedy is Berberis equifolium. It is Berberis equifolium. So it clears the complexion. In Fatak it is written, it clears the complexion. So mostly what you can do is in cases of especially acne, जहाँ पे डिस्कलरेशन रह जाता है, एंड देर आर मेनी स्किन डिजीज कंडीशन जैसे कि सोरियासिस है, एक्जिमा है, वो ट्रीट हो गया है,
वो चला गया, बट उसका डिस्कलरेशन अभी है, पेशेंट को डिस्कलरेशन अभी नहीं गया है, स्किन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है, सिर्फ डिस्कलरेशन रह गया है। इन सच केसेस आप बर्बेरिस एक्विफोलियम इंटरनली भी यूज कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्नी वाले पेशेंट को मैं क्या बोलता हूँ, गुलाब जल आता है जो गुलाब जल, उसमें ऐड करना है रोज वाटर, उसमें ये इक्वल क्वांटिटी में ऐड करना है ये मदर टिंचर बर्बेरिस एक्विफोलियम का, और कॉटन स्वैब लेकर उसको अप्लाई करना है। दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह नहाने के बाद या नहाने के आधे घंटे पहले, और रात को तो वो लगा के सो ही जाना है। देन आफ्टर दैट दे डोंट नीड टू वॉश द फेस। रात को बराबर अच्छे से रोज वाटर में मिलाकर मिक्स करके अप्लाई करना है फेस के ऊपर एंड देन सो जाना है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग you want to add, Dr. Ratik? No, sir. So, any question from the audience we would like to answer, or we can end? So, Nirav is telling, sir, I use Berberis equifolium mother tincture in one patient for bad skin tone and recurrent acne, and amazing result in skin. And now patient says my face Was wash, glowing. face glow कर रहा है. Yes. So that is what clears the complexion. Here's a Next question is alpha dose for lactation from Dami Oja. So 10 drops 3 times or 4 times, 3 to 4 times, 10 drops in 30 ml of water. मतलब एक चाय का कप आता है उतना पानी लेना है, उसमें 10 स्पून डालना है एंड वो पी जाना है 3 से 4 बार. Anything else? Can Avena sativa helps in Parkinsonism? See, the point is yes, definitely. Avena sativa helps in the tremor of Parkinsonism, but personally I have not verified. I have heard this from few of my friends who use this medicine in mother tincture. So definitely you can use this in Parkinsonism. जिस पेशेंट को पार्किंसोनिज्म में जो डोपामाइन थेरेपी चल रही है ना, उसमें ज्यादा इफेक्ट करता है इन अवेना सटाइवा इन पार्किंसन पेशेंट। स्पेसिफिकली पेशेंट को डोपामाइन थेरेपी चल ही रही हो वहां पे। और वो ट्रिमर के लिए एक मेडिसिन है अपार्ट फ्रॉम मदर टिंचर, स्ट्रिक्निनम, दैट इज यू कैन रीड इट फ्रॉम बोरिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज can we use Oleum jacoris mother tincture externally for extra hair growth? I haven't used for extra hair growth. Oleum jacoris is a remedy you can use to tone up the muscle. Last time you can go through our last video. You will get information on Oleum jacoris. Medicine name for dandruff is Cochlearia armoracea. Mother tincture for migraine. One of very good mother tincture for migraine is Chionanthus. In Boric it is written is break the habit for American sick headache. It is a remedy for American sick headache, means migraine. You can try this remedy, Chionanthus. So we can end today, Dr. Radip. Yes, definitely, sir. भूख लगी. So, yes, then we will meet next Friday. Till then, bye bye. Yeah, bye bye.